Mamatay na kayo lahat! Tagal namin kayong pinaghahanap! Dito lang pala kayo nagtatakong mga aking pero! Hayop ka kita! Agahan mo na! Okay! Ayop ka, demonyo ka! Pagbabayaran mo lahat ng mga kasalanan mo. Sige na, umalis na kayo! Bitbitin niyo yan! Tay. Tay. Tay, hindi. Tay. Tay! Tay, hindi mo kami mababawi ka pa, Tay. Hindi ka pa pwede mawala, Tay. Ba't ka bumitaw? Tay, hindi pa tapos, Tay. Hindi pa tayo tapos. Sabi mo, mabawi ka sa akin. Di ba? Sa mga taon na ako nung ka, Tay, di ba sabi mo, mabawi ka? Jonah, tumawag ka na ambulansya, please, Jonah. Tay! Hungay. Hungay. Puntahan natin si Lola. Si Lola. Nay! 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 Lola, Dimple, si Lola. Lola? Hungay, ang tatay mo. Nasaan si Mauro? Anak ko wala na. Anak ko. Mauro.
Pagkaroon niyo ng tarantadong yan! Ramon, andyan na sila Tanggol. Tanggol! Dito! Sama! Tanggol! Sino na naman yung kasama niyo? Ito ang iniipak na to. Ang nagpahirap sa... Ramon! Ramon, tama na! Ayan! 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 Sigaw! Sigaw! Tanda ninyo. Papa! Huwag na! Kinakailangan natin siya. Siya ang gagamitin natin laban sa mga girero. Sila ang mga ginamit ng mga girero para dayain ang eleksyon. Tanggol, magtitiwala ka sa tarantadong yan? Lo, siya na lang natitirang alas natin para lumabas ang katotohanan na ako talaga ang nanalo sa eleksyon. Habang nandito ka, araw-araw ko sa'yo ipararamdam ang impyerno! Sige! Buhatin nyo! Siguraduhin nyo hindi makakatakas. Garcia, dinala namin sa morgue ang katawan ng biktima. I-identify namin ang mga suspek sa insidenteng ito. Salamat. May naisip ba kayong dahilan kung bakit pakay ng mga gunmen ng pamilya nyo? May criminal record ang isang biktima, si Mauro Garcia. Hindi kaya may kinalaman ng buhay niya sa pagsalakay ng mga gunmen? Pasensya na, Lorca, Kalanyas, pero hindi pa kaya ng kaibigan kong sagutin yung mga tanong niyo. Pwede bang mamaya na siya mag-issue ng statement? O sige, nakikiramay kami. Ronggay, delikado na tayo dito. Makabalikan tayo. Oh. Pero saan naman tayo pupunta, La? Lola, Ponggay, kung gusto niyo, doon muna kayo sa amin. Oo nga, Ponggay. Tama si Pati. Doon muna kayo sa bahay. Kasi naman tayo doon. Maraming salamat. Walang anuman. Napakalaki ng utang na loob namin sa magulang niyo. Tara, tulungan namin kayo mag-impake. Salamat. Patawarin mo ako, Ponggay. Kung nadamay pati ang pamilya mo na dahil sa akin.
Pero pinapangako ko, sisingilin natin ang mga taong gumawa nito sa pamilya mo. Pagbabayarin natin sila. Hindi ako titigil hanggat di ko nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Mang Mauro. Dilo! Huwag, hindi na ako lalab. Pasok mo yan! Pasok! Huwag! Anong gagawin niyo sa akin? Ano to? Matay! Gusto mo? Tumabay! Okay na! Kunin! Kunin! Hindi ako lahat! Pinahin doon si Uwe eh! Baka na kaya, patigilin mo na kaya sila. Baka mapatay pa nila yung tao eh. Hayaan mo na sila. Rapat lang yan sa lahat ng kaayubang ginawa niya sa atin. Gusto mo? Yakat ka rito. Hindi ba ako nyo? Ang dapat talaga sa hayop na yan, pinapatay! Hayaan nyo sila! Huwag ka na lumaban! Mahatunan niyo po ako kunin ka! Hatunan niyo! Ayaw mo ha! Tasok mo! Tanggol! Matagal ko nang inahanting yan, anak. Saan mo nakita ang Lucio na yan? Nagpunta kami kay Ponggay. At pagkatapos biglang dumating ang tatay niya, si Mang Mauro. May pinakitang ebidensya laban sa mga Guerrero. Dahil doon siya ngayon nagtatrabaho. Nagulat na lang po kami. Bigla na lang kami pinagbabaril ng grupo ni Lucio. Ang masakit nun, namatay ang mga magulang ni Ponggay. Ano? Namatay ang mga magulang ni Ponggay. Eh, kamusta na siya ngayon? Nasaan siya? Naaawa ko sa kanya. Nang dahil sa akin nadamay siya. Nadamay siya sa lahat ng mga kamalasan na pinagdadaanan ko. Pero anak, huwag mo na masisihin ang sarili mo. Wala ka namang kasalanan doon. Pero Nay, lahat ho ng mga taong dumidikit sa akin. Napapahamak at nasisira ang buhay. Lahat ng tumutulong sa iyo sa laban, alam nila ang panganib na dapat nilang harapin. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Ako ang target ng mga Guerrero. Nadamay lang ang pamilya ni Ponggay. Hindi. Yung mga Guerrero na yan na may kasalanan. Tanggol, anak. Mabuti pa ang gawin mo na lang ngayon. Alalayan mo si Ponggay. Huwag mo siyang pababayaan. Kailangan iparamdam mo sa kanya hindi siya nag-iisa. Huwag mo kayo mag-alala, Nay. Hindi ko siya pababayaan. Pasok kayo. Ay, Si Lola din po. Bes, sige na. Okay na kami dito. sige, miss na ako. Basta magte-text ka ha. Oh, dito muna kayo ha. Aayusin na po namin yung tutulugan niyo. Basta pwede kayong magtagal dito, ha? Salamat ah. Wala yun. Di ko alam kung saan o paano tayo magsimula ulit. Di ko alam. Ponggay, Apo, ang mabuti pa. Magpakalayo-layo ka na dito. Sa dami ng napatay ninyo, baka malapit lahat. Balik kayo ng mga nakalaban ninyo. Lola, hindi ko kayo iiwan ni Dimples. Ano ba sinasabi mo? Ingat ka.
Hindi, Ponggay. Masyado nang delikado kung dito ka rin maglalagi. Ako nang bahala kay Lola Flory. Hindi ko siya papabayaan. Baka ako lang din magdadala ng peligro sa inyo. Masyado nang marami ang nangyayari sa pamilya natin. Anong plano mo? Saan ka pupunta? Hindi ko alam. Ikaw na bahala na. Basta hindi ko hahayaan may mangyari sa inyo ulit. At mananagot kung sino man ang may kasalanan sa pagkapatay ni Tatay at Tita Linda. Mananagot siya. Mananagot siya. Mag-iingat ako. Mag-iingat ako. Mag-iingat ko. Tangol, ayos na. Nakagat na tayo kay Lucio. Kulang pa yan. Ngayon, pagbabayaran niya ngayon ang lahat ng mga kawalang iyan niya. Tanggol! Tanggol! Tanggol, may bisita ka. Nasaan ang pumatay sa tatay ko? Nasaan? Nasaan? Ponggay. Tawa na, papahingay niyo naman. Papahingay niyo naman ako. Magang-maga ng mga katawan ko. Ayos ka! Ayos ka! Ayos ka na! Ano dapat nabubuhay yung katulad mo? Dapat siyang mamatay! Pinay mo yung tatay ko! Tama na! Tawarin mo na. Ayok ka! Ayok ka! Ito yung tatay mo, tapos umamin pa din kay Tanggol. Ayok ka! Tara na! Ito nga pala lahat ng informasyon na nakalap ko tungkol kay Titi. से 4 जो कीपर है मैंने देखे हैं अनफिट हुए हैं। तो इसका भी लेवल होना चाहिए, जैसे विकेट का लेवल होता है कीपर के लिए भी एक लेवल होना चाहिए, जगह सीधी होनी चाहिए। जहाँ बॉल आगे गिरता है कभी बैठ जाता है कभी बाउंस कर जाता है, ये अच्छा नहीं है। 8 ओवर हो चुके हैं, तकरीबन रन होंगे 52। 3 खिलाड़ी आउट, 9वां ओवर। सुहेल असगर लाला अकबर खान बेस्ट ऑलराउंडर है, लेकिन यार जो बेस्ट ऑलराउंडर हैं असल में जब भी आप देखेंगे ओपनिंग पे बड़ा डिपेंड होता है। जो जिसकी ओपनिंग अच्छी रहती है टारगेट अच्छा सेट होता है। अभी तक पूरी टीम दबी हुई है, प्रेशर में दिखाई दे रही है, कोई ख़ास शॉटें देखने को नहीं मिली और ये 4 रन होगा। गलत लाइन सिलेक्शन, लाला अकबर बाउंड्री आई 4 रन के लिए। गेम ऑन है, लेकिन इस मैच को आप किसी भी जाविये से देखें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 130 से 40 मैच होगा।
और ये बहुत बड़ा रन आउट था, बहुत बड़ा रन आउट था। यहाँ मिस किया शबीर ने। यही जो इजीपन होता है टीमों को अक्सर उनकी हार का सबब भी बनता है। अब यहाँ लाला अकबर वापस नहीं जा सकते थे, थ्रो अगर करते तो। चांस मिला है, देखते हैं जी। बड़े एक्टिव हैं लाला अकबर। ये जितनी देर रहेंगे कोशिश करते हैं रन मिलते रहे। डार्ट बॉल करना उनके लिए काफ़ी टेंशन लेके आता है, लेकिन थोड़ा सा है मसला, क्योंकि जो रनिंग वो बहुत अच्छी करते हैं, जो नॉन स्ट्राइक एंड पे और ये लंबी ट्राई पे गए थे। साजिद मामू जो जैसी वो रनिंग करते हैं उस तरीके के उनको बल्लेबाज नहीं मिले। स्लो रनिंग दरकार रहेगी। ये है ये टैलेंट। यहाँ 2 रन देखते हैं, या बाउंड्री या रुलोनी 2 रन बना लिए। पूरी बॉडी को घुमाते रहते हैं, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, परेशान करके रखते हैं बॉलर को। तो मुजम्मिल आए हैं जी। रन्स कितने हैं जी ये बताते हैं। नाउ ओवर स्कोर एम खान 5-9 59। इकानवी रेट इस विकेट के हिसाब से तो बेहतर ही है। मुकम्मल बॉल करेंगे और ये आउट हो गया। ये देखें, ये लॉलीपॉप कैच। तो दूसरा विकेट भी ले गए मुजम्मिल। काफ़ी वो तसलसल जो पिछले मैच में था क्वार्टर फाइनल में वो बरकरार रखे हुए मुजम्मिल लेफ्टी बड़े फायदेमंद साबित हो रहे हैं बॉलिंग पैनल में। अल खैबर की टेंशन दे रखी है, 2 विकेटें ले गए सनी और साजिद। जी तो गेम ऑन है जी। बिल्कुल अब आ चुके हैं लालू आ चुके हैं जी। लाली की बात करूं, लिटिल मास्टर है, लेकिन कमाल का जो है टैलेंटेड बल्लेबाज है। इस पोजीशन पे प्रेशर है। 4 विकेटें गंवा चुकी है 59 रन पर। मुजम्मिल काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। दूसरा ओवर है, 7 बॉलों पे 2 विकेटें अब तक ले चुके हैं राइजिंग स्टार की। ओहो बेहतरीन मुजम्मिल का प्रेशर बढ़ता हुआ बल्लेबाजों पे। सजाद हुसैन खोखर, हाँ बिल्कुल रिजवान मूसा है भैया आज। ओहो कैसा बॉल था, परेशान अंदर आया, बिल्कुल सोच से ज्यादा बॉल टर्न हुआ। बल्लेबाज बिल्कुल नहीं समझ पाए। लाजवाब बॉलिंग मुजम्मिल बलोच। दसवां ओवर जारी, सीधा बॉल किया था। लाला अकबर अब काफ़ी जिम्मेदारी जो उनके कंधों पे 4 खिलाड़ी आउट हैं बढ़ चुकी है।
ओ यहाँ की पिन से फिर 2 रन बिल्कुल बनाएंगे। मुजम्मिल लास्ट बॉल है और ये अच्छा शॉट है, लेकिन फील्डर वकील खान 10 ओवर इख्तिताम को पहुंचे हैं। बड़ा बेहतरीन ओवर मैं कहूँगा मुजम्मिल का, क्योंकि 2 ओवर में 2 विकेटें काफ़ी नुकसान दे के जा रहे हैं बिल्कुल टीम राइजिंग स्टार को। हाँ जी, तो 10 ओवर हो चुके हैं और रन 63 या 4 है। सिक्स 63 मोहम्मद जुल्करनैन खैबर इजीली विन करेगी। यार इजीली वाली बात जो होती है ना, 120 क्रॉस जैसे ही करते जाएंगे ये मैच बनने। तो मुजम्मिल आए हैं, बिल्कुल नेटवर्क यार प्रॉब्लम रहता है यहाँ। आज वैसे भी संडे है तो माजरत खा बिल्कुल यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम जो है थोड़ा था, माजरत खा। तो यहाँ अनफिट हुए हैं कयूम लोनी, अनफिट में गिर गए थे। थोड़े से गिरे हैं, मैच इसलिए रुका है। अल्लाह पाक उनको अपनी अमान में रखे। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो हमेशा खिलाड़ी ही गिरते हैं, चोटें लगती हैं। तो यहाँ थोड़ा सा बाजू का फ्रैक्चर है जो फ्रैक्चर है कयूम लोनी। देखते हैं जी जो इंजरी है कितनी हद तक है या नहीं। ये तो कंफर्म है गिरे हैं। बाजू का मसला बना है तो लेके जा रहे हैं बिल्कुल कयूम को। काफ़ी तो देखते हैं अब फील्ड रिप्लेसमेंट उनके लिए है या नहीं। कयूम बाजू का जो है फ्रैक्चर हुआ है तो उसकी जगह देखते हैं जी किसको लेके आते हैं। बाजू को जो टच हुआ है बॉल गिरे हैं जो, तो ये जो मसले होते हैं प्लेयर्स के साथ होते रहते हैं। तो प्लेयर जब तक आता है फिर 10 खिलाड़ियों के साथ ही फील्डिंग करना पड़ेगी, क्योंकि अभी तक उनके पास कोई और फील्डर नहीं है। तो मुजम्मिल अपनी बेहतरीन बॉलिंग जो कराच तीसरा ओवर है उनका 2 विकेटें भी ली हैं, परेशान करके रखा हुआ है मुजम्मिल लेफ्टी ने। तो कयूम लोनी
को बाहर भेज दिया गया है, अनफिट हो चुके हैं। तो ये नुकसान होगा अगर वो बल्लेबाजी पे ना आ पाए तो। जी तो मुजम्मिल सामने है लाला अकबर। सुस्त आगाज फराम किया था। तो यहाँ फील्डर का इशू है। मुजम्मिल और आकिब रशीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो दूर कर रहे हैं एक दूसरे के। जी तो गेम ऑन है। बिल्कुल थोड़ा सा फील्ड इशू था क्योंकि क्यूम इंजर्ड हुआ है और उसको बाहर बिठा दिया गया है, तो उसकी जगह जो फील्डर था उसका थोड़ा सा मसला है। अपडेट देते हैं फैसल बलोच आपको। मलिक मदनी मलिक टोटल बताते हैं भैया, टोटल बताते हैं आपको। मैच स्टार्ट होने दें इस ओवर के बाद। जी तो गेम ऑन। मुतम्मिल सामने आसिफ